from Palm Port. You must be knowing about the saffron, the beautiful kesar. It actually grows there in Palm Port. And my connection from Palm Port to KC Law College was when I started joining my legal course of 5 years integrated program from KC Law College. Completed my law degree in the year 2010 and then became volunteer with OP Sharma sir. Who is this person? I'll be explaining it to you. Why sir is so young by heart even if he retired a few years back. Actually, it's a dream come true to be among all of you. Thanks to the man for facilitating this program at a very short notice. But if we are here, we must take something to our own memories, to our own vision for protecting this beautiful place. Frankly speaking, Jammu needs all of you. We call you as green ambassadors for Jammu. Not for Jammu, but entire Jammu and Kashmir, entire country. I was just checking out the Happy Independence Day. Actually, that is my date of birth. The 15th of August gives me only one thing, which I am cherishing and believing, that I am a little bit independent of my own thought process. I am not a government servant. I don't work with the government. As an officer of the court, as an advocate at the High Court, I have a responsibility to work for the people, for the environment. Being a JNK's first environmental lawyer, my responsibility is to take care of environment. And the Honorable Chief Justice appoints me as an amicus curiae, means an officer of the court, means a friend of the court, to assist the Honorable Chief Justice on critical environmental issues. But if I am here today, after a span of all this struggle of 10 to 15 years, it's all because of my mentor, my teacher, my guru, Mr. OP Sharma sir, and the name prefixes with Vidyarthi. I always ask him, sir, if you are Mr. OP Sharma, retired IFS officer and PCCF, so why do you always use a word Vidyarthi? That's what inspires me. हम अगर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे, we always say that we are students of law. We never say that we are experts in law. When we say students, and that is where the connection with this Vidyarthi sir comes. A passionate botanist and hardcore conservationist and crusader of Dogri culture, someone who understood the vision of Maharaja Hari Singh, because when I am standing in the High Court saying, Lord Chief Justice, we need to protect these areas. Which areas? National parks, wildlife sanctuaries, conservation reserves are gifted by none other than our worthy Maharaja of the day. And it was the vision said that 2024 maybe if we have an environmental crisis, we'll be still having certain areas which are untouched, which are protected, which are conserved, and which are maintained. But unfortunately, I must say, कुछ हमारी तरफ से भी गलतियां हो गई होंगी, कुछ हम सब लोग जिम्मेदार होंगे. Why Jammu does not have a national park, except Kashtawar High Altitude National Park? Don't we deserve a national park? Don't we deserve a space where we have a much better perspective than zoos, where you capture animals and put them in a cage? You have Ramnagar Wildlife Sanctuary. Why we have not been able to have Ramnagar getting elevated as a national park? Why it is still there as a wildlife sanctuary? We need to work. Actually, when I was knowing about the school of plant systematics, we call it, you call it botany, how you can use technology in order to create a digital herbariums and will ultimately gain you a fellowship at a global universities. I must tell you about what we are doing in Tree Talks. Every day
whenever I go into forest and I am walking through the beautiful national parks, wildlife sanctuaries, I only get to know Mr. Vidyarthi sir. Why? If any beautiful flower you see anywhere in the forest, I take a picture and send it to Vidyarthi sir. Sir, naam nahi pata hai. You know, means any species of plant systematics. If you don't know the name, scientific name, common name, Dogri name, Urdu name, Kashmiri name, you only have to have Sharma sir's number, text it within 30 seconds. I have proven myself that ek din main room mein baitha tha, there was a butterfly, something like a moth. I took a picture, I said that who on earth can help me ki is keede ka kya naam hai? Not only the name, the zoological name, the family, then you go into the genes and all other things. The one single person's name comes to your mind, that is Sir O.P. Sharma. And that's what I am here. Trust me, if I am wearing this tie, this grey coat, some label pins are at my blackboard because I don't use them on my off duty. Trust me, it's the contribution of Mr. Vidyarthi sir that I standing before all of you to share with such a great confidence that there are proud sons and daughters of this soil which can really lead us to the right path. And sir is one among them. So now imagine we take you into a different journey. I don't have PPTs, I don't do PPTs, I don't discuss textual things. I would have loved to take you to Ramnagar Wildlife Sanctuary anytime sooner, and we could have sleeved up yahan se, theek hai na? And put it like this, theek hai? Like this, and cleaned up the trash if you have any. Jammu is losing its sheen from the city of temples where I have studied. Trust me, when I was walking through and driving through, what I can only see is that single-use plastic. Everywhere I am seeing it. And I am very disturbed with it. Why? As an environmentalist, you should be concerned. As a conscious citizen, you should be concerned. As a naturalist, as a conservationist, you should be concerned. But I was feeling that I am duty bound because the Honorable Chief Justice appointed me as an amicus curiae, the commissioner in the Honorable High Court, to monitor such problems. And I have no reason, once I opened up my laptop and I used the chat GPT, which is a very important tool. I'm sure you are using it wisely and doing it proofreading multiple times that you don't miss any sort of a perspective. I served a legal notice to the Jammu Municipal Corporation Commissioner and gave him a time of 15 days to ensure that every street, every ward has no plastic littered around. Otherwise, 60 days ke baad, 15 din notice time, 60 days ke baad, I'll be duty bound to file in criminal contempt proceedings in the Honorable High Court. Only to make sure that you will get a better environment, you will get a clean environment, and you will make sure that Jammu remains and maintains that the religious sanctity attached to it. And that's what I request all of you to join us as green ambassadors, be part of this wonderful journey of being into environmental world, protect it, conserve and manage it in such a manner that you all play your role. I am grateful to all of you for giving me a chance to be among you all. I always appreciate one thing, that it is high time the youth of Jammu must stand up and do something for environment. And now I'll ask you some questions. And when you put it like this, the mind starts working in a different direction. Ab mere pe sawal aa jayega, mujhe answer dena. No, nothing like that. Ask this question to your soul, to your own consciousness. Don't answer it to me. How many plants, as students of botany, you have planted? Don't answer it to me. Don't give an explanation to me. But if you ask the same question to me as an environmentalist,
as a conscious citizen, as someone who is trying to build a university of my own, we have set a target of 1 million trees by 2030. We have already planted 2 lakh. Out of that, 20,000 has gone for trees for Shri Mata Vishnu Devi. संभो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। साथ साथ चलें, साथ साथ सोचें और साथ साथ करें। जैसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे देवताओं ने हमारे लिए उपासना की है, उस पर चलें। अहम पुरुषोत्तम लाल दुबे शिक्षक रूपेण सेवानिवृत्तो हम इदानीम् अत्र भवतां समक्षे पर्यावरणविषये महोदयेन यथा उक्तम् अस्ति तथैव अहं वदिष्यामि। भवान् अवधानेन शृण्वन्तु। अभी मेरा संस्कृत वाला जो है वो पाठ खत्म हुआ, तो डोगरी में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यहाँ आना तो ये पैराशूट से उतरते ना वैसे ही है। मुझे यहाँ का पता नहीं था, मुझे तो आज का पता था साइंस कॉलेज का। तो महोदय को मैंने फ़ोन किया, आप एक कल्प वृक्ष हैं, आप एक पर्यावरण के कल्प वृक्ष हैं। आप जैसा महोदय ने यहाँ पर बताया है, केवल और केवल वृक्षों के बारे में नहीं, वनस्पतियों के बारे में नहीं, ये सब तरह के जीव विज्ञान में भी ध्यान रखते हैं और पर्यावरण के बारे में भी सब पूरी तरह से। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनकी शरण में आया था। कभी 2011 में मैं भी श्रीनगर में भी इनसे मिला था, निषाद विभाग में। तो मेरा जो जन्म है वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर जीडी नाम है, एक मेला लगता है वहाँ बाबा जिद्दों का। तो मेरा सौभाग्य है कि उसको जीडी बाबे का जाड़ बोलते हैं। जाड़ मतलब जंगल, जंगल के पास में ही मेरा जन्म है और मेरी वैसी प्रवृत्ति रही है। जीडी मेरे ख्याल में जड़ी से हुआ होगा, जो पंचकूला जड़ी होती है वो उसी से जीडी बना होगा। उसका नाम भी वनस्पति पर ही है। क्या बात। तो हमारी जो शांति पाठ होता है, ध्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति रोग हृदया, औषधियों के लिए शांति हो है, वनस्पतियों की शांति, सब के लिए शांति मांगी गई है वहां पर। तो विशेष तौर पर औषधियों और वनस्पतियों का ही इसमें जगह क्यों आया, क्योंकि आवश्यकता थी। ये सब जीवन के लिए आवश्यकता है और जब शांति पाठ होता है तो उनके लिए प्रार्थना की ही जाती है, उनकी शांति बनी रहती है। एक बार तो वहां पर मेरा जन्म हुआ, बचपन मेरा वही निकला। तो वृक्षों पर मैं निकलता था। कितना सौभाग्य का बात है, जिस जाड़ का मैंने नाम लिया वहाँ पलाश के हजारों वृक्ष थे और सर को मैंने वहाँ विजिट भी करवाया, एक बार ले भी गया। और मुझे बाद में पता चला सर के बेटे का नाम पलाश है। उन पलाश के वृक्षों पर मैंने चढ़ करके गाय भी चराई हैं और वहाँ खेला भी हूँ। एक दंड पलाम एक खेल होता है, वो डंडा फेंका जाता है, फिर ऊपर चढ़ा जाता है, फिर ऊपर से निकल करके उसको खेला जाता है, वो वहाँ पर मैंने खेला हूँ। तो इन वृक्षों के बीच में रह करके हमने खूब मजे किए हैं। वही एक थोड़ी सी खुन्नस थी दिमाग में। वृक्ष मैं जब छठी पढ़ता था, सच में मेरे से हुआ कुछ नहीं। उस समय मैंने आलू की खेती जब हमारी थी, उसमें एक टमाटर का पौधा हुआ था। मैंने आलू को उसकी कटिंग लगा करके उस पर वो लपेटा था। आज भी मुझे पॉलिथीन लपेटा था। उस समय छठी पढ़ता था, पर मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। ऐसे ही शायद जब सोते हैं तो भावनाएं आती हैं, सपने आते हैं और खुद ही वो होता है। वो लगा नहीं, किंतु वो होता है, ये मैंने पढ़ा भी है, वो हुआ भी है। वो मेरे से नहीं लगा है, लेकिन वो बाद में हुआ। जब हम किसी पथ पर चलते हैं तो स्वतः ही देवता मिलते चले जाते हैं। आज एक नए देवता हमें मिले हैं, नदीम कादरी जी। सच में मैं तो कह रहा था, अगर मुझे आप 10 साल पहले होते तो मुझे मिले होते तो एक वृक्ष जो मेरे यहाँ एसटी तारापुरी के सामने पार्क में कटा, उसके लिए मैंने गुहार भी लगाई थी, शिकायत भी गई थी,
पलाक्षी का वृक्ष कटा था। ओहो। मेरे घर से आया था और मेरे मेरे पिता कह लीजिए, मेरे पूर्वज कह लीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा कह लीजिए, उसको जब कटा था शिकायत भी हुई थी, लेकिन वो नहीं बच सका, अंततोगत्वा उसको काट दिया गया। लेकिन यदि आपके इसमें मार्कंडे पुराण में लिखा है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आप कामना करते हैं उसको आप निश्चय ही पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, उसको वो पक्की होती है। और मैंने वो सोचा था ये यहाँ से कट गया, किंतु पलाक्षी का वृक्ष ऐसा है, उसकी जड़ें फिर से अंकुरित हुई, फिर से पौधे अब बड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपको मुझे आधार मिल गया, जब उस पर कभी कुठाराघात होगा तो मैं महोदय को फोन करूंगा, उस समय मेरा कानून मेरे साथ होगा, यानी सब बड़ा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कुछ नहीं है, जैसा आपने कहा, देखिए ये दूध के पैकेट्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, घर में जो आम खाया था उसकी गुठली इसमें लगाई थी, आज वो इसमें है, और ये कहीं भी हो सकता है इसमें लग करके आपके महाविद्यालय में लग करके ये कल फिर से आम देने लगेगा, चिड़िया बैठेंगी, छाया देगा, लकड़ी देगा, पत्ते देगा, पूजा के पत्ते काम में आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम इसको करते रहें। तो महोदय का घर, मेरे घर में भी विजिट हुई है, तो इन्होंने मेरे को बहुत, आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, इन्होंने अपना जो मोमेंटो है वो मुझे दिलाया है। सच में ये मैंने लिया है, ये इन्हीं का है। हम जो इनके छाया तले चल रहे हैं ये इन्हीं का, क्योंकि परिवार का बड़ा जो है वो अपने सब लोगों को अपना मानता है। तो इसलिए इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है कि मैंने तिलक लगाया है, काजी साहब ऐसे बैठे हैं और ये सब बच्चे हमारे, हम सब इस दुनिया के, जब ऑक्सीजन घटेगी तो सबके लिए घटेगी, जब बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी, फल मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, क्या सबके लिए है। तो इसलिए हम सब कुछ छोड़ करके, मेरा घर 4 महल्ले में बना हुआ है, मेरे घर में इतनी सी जमीन नहीं है, लेकिन मेरे छत पर करीब 200-300 पौधे लगे हुए हैं, और वो पौधे स्थायी नहीं रहते, चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, नए उगते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इस तरह से ये जो कहा है कि हम बार बार एक ही बात सोचें, एक ही ऐसा चलें, तो जैसा इन्होंने कहा है, महोदय जी का तो मैं शिष्य भी हूँ। ये पर्यावरण की शब्दकोश है, डिक्शनरी है, ये वनस्पतियों की डिक्शनरी है, ये वृक्षों की डिक्शनरी है, जीवों की डिक्शनरी है। सच में अगर आज इस डिक्शनरी को हमने नहीं संभाला, कल वो सब हमारे से लुप्त हो जाएगा। तो मैं इस मंच से आज पहली बार ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, अगर श्री पद्मश्री और दूसरे पद्म विभूषण पुरस्कार मिलते हैं तो ऐसे लोगों को जरूर मिलने चाहिए। तो बीच में बैठे हुए हैं, ऐसी संस्कृतियां जो हैं वो इधर से जा सकती हैं, ऐसी जो बातें जो हैं वो आगे इधर से निकल सकती हैं। तो अगर इनको मिलता है तो वो हमें मिलेगा, हम सबको मिलेगा, हमारे जीव विज्ञान को इसको आगे बढ़ावा मिलेगा। एक पौधा अवश्य लगाइए, एक दिन का, अगर एक दिन का नहीं लगा तो महीने में 30 लगा दीजिए। अगर महीने में नहीं लग सकते 265 पौधा जरूरी नहीं है कि आपका ही लगाइए, आप मिर्ची का भी लगवा सकते हैं। क्या बात है, वो भी देती है। पुदीना ही लगाइए, पुदीना ही लगाइए, कुछ तो कुछ करिए, करते रहिए, बांटते रहिए, आगे चलता है। एक स्पाइडर प्लांट मेरे पास है, इतने मैंने बांट दिए, क्या बात है, लोग खुश भी होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरा फिर से ये हमारी प्रार्थना वनस्पतियों के लिए और पेड़ों के लिए तभी होगी जब हम इनके साथ रोज आगे चलेंगे। ऐसा मत कहिएगा कि हमें कुछ आता नहीं है करना ये वाला, हम हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, योग, एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आप जब उतरेंगे तो स्वतः ही उंगली पकड़ने वाले आ जाएंगे। धन्यवाद।